modulation. Okay, is it visible to you? Yes, sir. Writing board is visible. Okay, so let us have so amplitude modulation we have discussed already. That is, uh, uh, in this case, the amplitude of the carrier signal is modulated with respect to the message signal or the modulating signal, right? So this means that if you take this signal that I have given you yesterday, let us say this is your modulating signal, right? And similarly, you have this is your carrier signal. This is your carrier signal, right? So the carrier signal is a high frequency signal, okay? And so we can write uh, okay. So this modulating signal we can write as this MT, we can write as AM cos 2 pi FMT, okay? That is the modulating signal, okay? So this signal is your MT and this signal is your carrier signal CT, okay? And this carrier signal CT you can write as AC cos 2 pi FCT, okay? Where FC the carrier frequency and FM is the, now what we say is that in amplitude modulation, this AC is becomes a function of, it becomes a function of MT, right? Okay. So the carrier amplitude of the carrier signal becomes dependent on the modulating signal, right? So this means let us say then AC will become a time dependent, okay? Because the amplitude of this modulating signal is time dependent. So this means this AC will become, in fact, you can write ACT. This becomes a time dependent, right? So this means how to write this? The simple way is that this means you can say that now the modulating signal, means modulated signal. So the uh, modulated signal, let us say denote this by ST, okay? And this will here is an AM, okay? So I will not write AM all the time, but since we are discussing amplitude modulation, so this will be amplitude modulation. I'll write only ST. So this implies that ST will become a AC T cos 2 pi FCT. Now you see this AC here is constant, okay? But now
this AC is not a constant, it becomes a time dependent, and dependency will be the dependency factor will be the instantaneous value of this modulating signal MT. Okay, so this we can write very simply. This we can write very simply as ACT को लिख लो. हम क्या करेंगे, AC तो कांस्टेंट आपका है प्लस MT, right, cos 2 pi FCT, right, where we have changed this AC T we have considered as AC, ये आपका जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल है, प्लस वी विल ऐड MT, राइट. व्हाट डज इट मीन इज दैट, अब इसमें करना सिंपली कुछ नहीं, आपको जो है इस सिग्नल में इस सिग्नल को आपने ऐड कर दिया है AC में. So every time this AC will keep on changing. Okay, is it clear to you? Now what does it mean is that, what does it mean? So you can write इसको further आप जो है इसको expand कर सकते हैं. So you can write that this implies that this HT you can write as AC plus MT की value you can write, this is your AM. For this particular case, this is a general standard case, MT may have any value, but our case we have take MT, we have defined. So MT is your AM cos 2 pi FMT, so you can write cos 2 pi FMT, right, and of course cos 2 pi FCT. Now let us see how its wave will be visible to you. So its wave shape, if you go so if you go, its wave shape will be इसको तो मैं थोड़ा यहीं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ लिखूंगा तो फिर कट जाएगा ये. So I will show you like this. Okay, ठीक है. So you see that now this is your so you see that this is a amplitude modulated signal or wave, AM wave, right. ये AM modulated लिखा हुआ है, गलत है, AM में तो खुद ही modulation है, but since AM becomes a one single word, so now people AM modulated, but actually it's a AM wave. Okay, so sometimes some irrelevant words are added, but in practical speaking, but otherwise this is one. AM means amplitude modulated, but they have AM modulated wave. Okay, so this wave we see that is you don't see this contour lines. This is only they have shown the contour lines. Okay, now we see that is what's happening is that this carrier signal maximum amplitude is not constant, it is continuously changing. And what is the parameter for the change or variation is, that is your modulating signal MT. That is why you have been shown this wave shape of modulating signal. ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना. सो दिस वैल्यू इज योर AC प्लस AM, ठीक है ना. अब आप इसको ये देखो यहाँ से,
सॉरी, यहाँ पे देखो. सो व्हाट विल हैपन इज दैट ये आपका AC है, दिस इज योर AC. ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर, राइट. तो इस पॉइंट पे देखोगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस AC प्लस AM आपका आ जाएगा, राइट. So AC plus AM is this one. Simply you have what this becomes. This is your AC plus MT, and it will at any instant of time, right? MT. So at this instant at 0, T is equal to 0. So value of the modulated signal AC plus AM. तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा यहाँ के ऊपर. अब देखो तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, राइट, समथिंग लाइक दिस. सो दैट इज व्हाट वी हैव शोन, राइट. So actually आप forget about that. We have starting done from here. अगर उस सिग्नल को लोगे तो ये we have taken from this value, right? So here okay, so this is your modulating signal. So this value is your AM and this value is your AC. ठीक है ना? So that, and similarly as hello, yeah, good morning, man. Yeah, fine. Okay. 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 From Delhi, Ajmer is, I think, very close. So by car we can travel, no issue. Obviously, train plane से काफी क्रॉस दिक्कत है. Yeah. Okay. ठीक है. Okay. Yeah, I'm available, and by car I'm comfortable if it is going by car. Not. No, I think it is okay. A car is comfortable for me because I can travel for 300-400 kilometers, even 500 kilometers by car. That is comfortable for me, so no issue. Okay, yeah. Oh, thank you. 17, 18, 19, 3 days. अच्छा, ठीक है. 17, 18, 19 I will block my dates. I think it will be again the same, means Friday, Saturday, Sunday. But I have to leave on Thursday, right? Is it okay? No issue. I'm here. I'm audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we're saying that. So I think it is very clear to you. I'm not going to much explain. If any confusion, you can see. So this is the wave shape. So only what we have, our concern was that is the AC, that is the constant, should become a time dependent, and that dependency will be the with respect to the instantaneous value of this MT, and that's what you are looking over here. Okay. Now let us see some mathematically. This is the visual graphic.
we can have some mathematical analysis as well. Okay, so if you see this mathematical, I think इसको थोड़ा सा मुझे delete करना होगा. मैं इस वेब को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना. इफ यू हैव एनीथिंग सो आई विल डू इट अगेन बिकॉज आई नीड सम स्पेस. सो दिस इज योर, इसी हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं. सो इट वाज am प्लस ac cos, सॉरी, uh, 2 pi fm t and cos 2 pi fct, right? As I told you earlier, that is I will show you engineering के अंदर क्या designing में mathematics is there, so you have to prove your every design mathematically. That is what we are doing. And I also told you that is I am not going to use a very complex mathematics. So very simple mathematics. If you find any difficulty, you can anytime you can stop me and raise the questions. Okay. So so now we have seen that is this becomes your modulating signal am becomes ac plus am cos 2 pi fmt. This is your mt, okay, and cos 2 pi fct as it was. Now what you can see here is that let us take this ac outside, and this becomes your 1 plus am divided by ac. इनफैक्ट इसको थोड़ा सा मैं एक वर्ड और तुम लोग कर दूं फिर इसको. तो लेट अस टेक, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं. चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर लो, फिर बाद में करते हैं, ठीक है ना. पहले इसी को तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. सो am ac and cos 2 pi fmt, ठीक है ना. Yes, sir. Constant, you know that, right? So this ac, let us make another constant. Let us say this is m, ठीक है ना, and cos 2 pi fmt, okay, and let us write this cos 2 pi fct, okay. So this becomes, now this m is a very important parameter, right? This m is your am by ac, right? This is the ratio of the maximum amplitude of the modulating signal and carrier signal. That's fine. This is a very important parameter in your modulation, and this is called your modulation index, right? इसको याद कर लो. This is a very important parameter, right? ये आपके पूरे इसमें modulation में it will remember. So, and this is simply the ratio of the maximum amplitude of your modulating signal, that is the message signal, and the carrier signal, okay. So मेरे ख्याल से अब इसको मिटा के ऊपर जाना होगा मुझे, ओके. तो नाउ लेट अस कम टू यहाँ पे हम आ जाते हैं. So you can say that this equation that we have developed, ठीक है ना, this is the equation of modulated signal,
राइट। अच्छा, इसमें हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? व्हाट इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल? हेलो, अरे सब सो कैसे गए? 2 पाई FC। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेचर क्या है तुम्हारे पास? कोसाइन नेचर का है। साइनोसॉइडल सिग्नल, यही तो मिल गया ना। देखो, प्रैक्टिकल सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग वो साइनोसॉइडल नहीं होता है, वो तो तुम्हारा वॉइस सिग्नल होगा तो अजीब अजीब तरीके का होगा, कुछ पिक्चर होगा, अजीब होगा। बट हमारे लिए क्या है, तो ये इक्वेशन तुम्हारा कब आया है? व्हेन इट इज ए साइनोसॉइडल। सो इसको हम कभी कभी बोलते हैं साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड सिग्नल। साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड AM wave. Does this is means that your modulating wave is sinusoidal? So this equation is a particularly for a sinusoidal input signal or message signal. ठीक है ना? Okay, is it clear? Okay. Now coming back here again, अगर जो तुम इसको यहाँ पे हम, so we have seen that is कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट इसको भी डिलीट कर देते हैं यार, इसको भी डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं, बाद में फिर लिख लेंगे। सो इफ यू रिमेंबर दिस सिग्नल, इसको फिर से एक बार हम कहते हैं व्हेन as I told you, if MT may have any signal, it may have a voice signal, it may have a some infrared signal, it may have some your even images in that form. Okay, वो अलग होगा. So in that case, you can write this HT as ये इस इक्वेशन को हम लें, इस इक्वेशन से यहाँ पे हम ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? Then this becomes your AC, बाहर ले लो, 1 plus 1 by AC in terms of MT, where MT may have any value. It may be sinusoidal, it may be non-sinusoidal, it may be ramp, it may be anything, doesn't matter. Okay, cos 2 pi FCT. Okay, so and 1 by AC is a constant, because AC is constant, 1 by AC is constant. So this you can write AC 1 plus, let us write this as a KA. ठीक है ना? K is a constant, right? Cos 2 pi FCT. ठीक है ना? Okay. So this becomes your another equation, right? So अभी आपको देखो AC, so अब आपका क्या हो गया कि this maximum amplitude is become this much. ठीक है ना? ये आपका हो गया ACT. ओके, तो ये आपका it is a carrier signal. The only difference is that is its amplitude is not a constant now. Okay, so this is called, this is the standard equation for AM wave. ठीक है ना? ये सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका है, where MT may have any shape and type. Okay, so what we are doing here is, this is your KA we have taken as a constant. This is 1 by AC, and this is called your you may call this as a modulation constant. ठीक है ना? Modulation constant. ठीक है? So simply, so this equation, so in general this equation is this equation is the standard equation. However, for our case, we are discussing sinusoidally modulated AM wave. In this case, the previous equation that we have discussed will be there. Okay.
सबको भी डिलीट करो, ठीक है। नाउ एम को चूंकि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा आप you have to monitor the modulation index because there are many things dependent on the modulation index, so you have to mention always the modulation index. उसको फिर so sometime you need to calculate this modulation index from your wave shape of modulated wave shape, okay. So now this is a wave shape from where you have to compute your modulation index M, okay. So what we have designed is that, see, let us see, that is, this is the maximum one we are taking. Let us say we write this as V max, right? And this will be your V minimum, okay, ठीक है. Now see, this is your AM, okay, and this is your AC, okay. So AC, नहीं ये कुछ गलत हो गया, सॉरी, वो यहाँ आएगा, ठीक है ना. So this whole portion is your AC, right, and this one will be your AM, ठीक है. So now what we have seen is that this M is equal to modulation index is equal to AM by AC, okay. Now what we have to do is that तो अब इसको निकाल लो. So AC plus AM, this will be your, कितना हो जाएगा, V max minus V minimum, ये दोनों चाहिए, ये रिलेशन तुम्हारा पूरा डिवाइडेड बाय 2, ये तो हो जाएगा ना तुम्हारा V max
Is it clear? AC plus AM. Okay. And right? And you see that is V max कितना होगा तुम्हारा? AC plus AM. Okay. And this value and V minimum कितना हो जाएगा तुम्हारा? बताओ V minimum कितना हो जाएगा? AC minus AM. This will become your AC minus AM. तो यहाँ से तुम AM और AC निकाल लो. So AC will become your V max. इसी से निकाल लो दोनों क्वेश्चन से. V max plus V minimum by 2 and AM will be your V max by V minimum by 2. ठीक है ना? एक्चुअली तुम लोग थोड़ा सा गलत हो रहा है तुम्हारा. ठीक है ना? एक्चुअली होता क्या है, ये V max होगा और ये आएगा, तुम इसको V minimum लेते हैं, इस वाले रिलेशन को. ठीक है ना? इसको छोड़ा हम एक पॉजिटिव एफ शेप को, दिस इज V minimum. ठीक है, यहाँ से निकाल लो कभी भी. ठीक. सो ये वाले रिलेशन हटा दो. So this means that your modulation index will be equal to your V max plus V minimum divided by V max minus V minimum. ठीक है? Is it clear ना? नहीं, उल्टा हो गया. ये V minimum AM इज ऊपर है और AC नीचे जाएगा तुम्हारा, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी, तुम लोग बोलोगे नहीं तो ऐसे हो जाएगा. AM is above, so AM is equal to V max minus V minimum and V max plus V minimum. So what does it mean is that you have to keep VM, you have to keep monitor always modulation index in your स्क्रीन. सो क्या करते हैं कि आपको सिर्फ को इन दोनों को मॉड्यूलेट करना है. ठीक है ना? सो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम यूजिंग दीज टू पैरामीटर, ये मिनिमम वैल्यू एंड this maximum value in positive side, we are not going negative side, so you have to always make them constants. Now see, this M is equal to AM by AC. So अब क्या हो जाएगा, when AM is less than AC, ठीक है ना? So this implies that is modulation index will be less than 1. Okay, and when AM is equal to AC, then this modulation is equal to exactly 1, and if AM is greater than AC, then modulation index will be greater than 1.
राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को तुम जो है 3 पैरामीटर इक्वल टू 1 रखो, लेस देन 1 रखो एंड ग्रेटर देन 1 रखो, तो फिर क्या होगा तुम्हारा इसका, ठीक है ना। नाउ यू सी दिस, देन इफ यू सी दिस पैरामीटर्स, ठीक है। So this is when m is less than 1, right? And you see this is m is equal to 1, and this is when m is greater than 1, ठीक है। बिल्कुल आपको तुम्हें लग रहा है कि ये जो शेप ऐसी आना चाहिए, डोंट जस्ट क्राइम इट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम अपना वेब शेप तुम्हारे पास है, तुम समझो कि होगा कि नहीं होगा ऐसा। हाँ जी, कोई बोल रहा है नहीं? हेलो एनीबॉडी? सर ठीक है। यस सर। अरे ये ठीक है कि गलत भी है? अगर जो मैं लिख दूं कि इफ m इज लेस ग्रेटर देन लेस देन, तो ये होगा, तो मान लोगे इसको? नहीं सर, करेक्ट है। करेक्ट है ना। ये तुम लोग आप जी। सब हम जो बता रहे हैं ना उसको एज इट इज, कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ कि जो कहूँ तुम सब सुनते रहो, है ना। इंजीनियरिंग और साइंस में क्या है कि यू कैन ऑलवेज डिफर लॉजिकली, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास वेव शेप दिखा दिया, देन यू सी व्हाट विल हैपन इज दैट इज, ये जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ाओगे am और ac इक्वल हो जाएगा तुम्हारा। तो ये फिर आके देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेस देन है, फिर जब इक्वल हो गए दोनों, ये ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन था, आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। बिल्कुल मैच कर सट गया आपका, राइट। सो दिस इज व्हेन am इज इक्वल टू ac। जब तुम am को यानी am को ac से ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली क्या करोगे, जब माइनस में आएगा तो फिर नीचे चला जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग, right? It is going in this way and it is going in this way, right? So this is इन दोनों को तो छोड़ दो, this is very important to explain. Then what's happen, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका है, ये यहाँ पे आपको एक now what's happening here is that ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग और रिवर्सल, फेज रिवर्सल। दिस इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ फेज रिवर्सल। देखो ये वेव शेप तुम्हारा क्या चल रहा है ना, आराम से चल रहा था इसी वेव में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चला गया पॉजिटिव में, ये वेव शेप जो तुम्हारे यहाँ से गया ये चला गया पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ये पोर्शन पॉजिटिव में चला गया, और ये वेव जो तुम्हारा ऊपर से आ रहा था ये नेगेटिव साइड में चला गया, ठीक है ना। सो एट सम पॉइंट फेज रिवर्सल विल टेक प्लेस, और फॉर फेज रिवर्सल कभी कभी कहते हैं इसको ओवरलैपिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे वाले वो दोनों ओवरलैप कर गए यहाँ के ऊपर। ओके, सो दिस इज, सो इसके सिग्नल में क्या हो गया, सिग्नल आपका फेज रिवर्स हो गया। सो इन दिस केस जो रिट्राइवल ऑफ द सिग्नल बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, सो द रिट्राइवल, because you have to retrieve your signal at the receiving end, so retrieval becomes complex। ये हम नहीं कहेंगे कि ये आप बिल्कुल इम्पॉसिबल, इंजीनियरिंग में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड डिफिकल्ट होगा आपका जो है, ठीक है ना। तो टीडियस टास्क है। ओके, सो व्हाट वी डू इज दैट इन प्रैक्टिस वी शुड कीप
this modulation index less than or equal to 1, right? So in practice, we have to keep modulation index less than or equal to 1. So this is the I mean the best option. यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल आपका there is some loss may be there because this boundary condition is always there, so it should be always less than 1. Okay, so it may be 0.99 है ना, but it should not be even equal to 1. Maximum हम कह सकते हैं कि it should equal to 1 for theoretically. Practically it becomes a difficult for you to retrieve, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम आपको मैथमेटिक्स में सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है. सो वी डोंट गो फॉर ए बाउंड्री कंडीशन. दैट इज व्हाई आपको क्या बोलते हैं कि t टेंड्स टू 0. वी नेवर से कि t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 कंडीशन पे किसी चीज को कैलकुलेट करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. Similarly, we say t tends to infinity. We never say t tends to become infinity. जब t infinity हो जाएगा तो फिर आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा कभी भी. इसलिए हम मैथमेटिक्स में t tends to infinity, t tends to 0. Okay, it tends to ideal condition. Okay, so in practice, this modulation index should be less than 1. And less than r at the center, you can say maximum to 1. Okay, so and this is sometime we call it over modulation. ठीक है ना. So that it is over modulation. So over modulation is not desirable in practice. ठीक है, is it clear? Now I will finish here. ठीक है ना. And some further we can mathematical analysis we will do tomorrow. Any question at this moment? Any question? हाँ, सब चुप कैसे हो? कुछ बोलो कि नो भी तो बोलोगे ना. यस में से नो तो नहीं बोलोगे. Are you hearing my voice? Yes, sir. सुने क्या आप? Disconnect तो नहीं होना. So if there is any question you can ask. If there is no question you can say no sir. कुछ आवाज तो आए तुम्हारी तरफ से ना. ठीक है. So I think so you can further study. If you have any question you may ask tomorrow as well. There is no issue at all. So I will finish over here and let us say go for okay. So stop this presentation. I will take some your attendance and then we will finish. Okay.